it is our privilege to invite Dr. Subramaniam Rangan on stage. He serves as a member of Board of Advisors at Shiksha Lokam and is the esteemed jury chair for the Shikshagraha Awards. Additionally, he is a professor of strategy and management at INSEAD. Dr. Subi, we are honored to have you with us today and request you to officially open the award ceremony. Let's give him a big round of applause. Good morning, everybody. It's such an honor to be here. I'm going to do something. I request you all to stand up, please. Everybody. And I want you to look around and see what brings us here today. We've heard all of these amazing comments about leadership. And, I think the ship is important. There's leadership and there's stewardship and entrepreneurship. But the most important ship is, what is the most important ship? Relationship. And that's what we're bringing together here today. Thank you, Shibu. Thank you, Kumari, for bringing us here. Thank you, Shiksha. Really, thank you. And the most important relationship is friendship. It's fantastic. Thank you so much. You may sit, please. Now, I have a couple of duties. One of them is eventually to introduce our awardees in this inaugural award, the Shikshagraha Awards. I also have a duty to briefly enumerate who the jury is. But I was also requested to make some remarks about this. And, the way I have been thinking about our life, our existence, it starts like this. I think the earth is a fact, but the world is an idea. The earth is a fact, an astrophysical fact, but the world is an idea. And that means, as we just heard, it's the person who occupies the chair. Each of us, each of you, we are all here. The world is just a representation of our energies. If I had to play the Antakshari and say E for energy, each of us is just embodied energy. The Big Bang was energy, and we are all products from that Big Bang. So all we have is energy. Now the thing is, how do we want to guide that energy? How do we want to guide that energy? How do we want to train that energy, and how do we want to tune that energy? So the point I'm making is, our world is endogenous. What we experience, whether it is in the United States, whether it is in India, whether it is more internationally, it is a function of this energy. And of course, training and tuning that energy is really the role of education. Education means to bring out the best in us, oidomania. That's the root of the word educate. To bring out the best in each of us, there is some energy. How do we train that? How do we tune that? I think parents give life, medicine saves lives, but education shapes lives, shapes livelihoods. Education is really such a foundational thing. We talk about the demographic dividend in India, but that will only become a dividend if education, both cognitive and non-cognitive. And again, I come back to not just leadership, but relationship. And what is relationship? Relationship is about caring. Relationships are about caring. An economy is about transactions, but society is about relationships. And we want to have a large economy, but we want to have a vibrant society. And that means community, that means relationships. And that's what we're celebrating here today, is individuals who have taken their energy and channeled it to others in collaboration with others. By the people, for the future. This is what we're celebrating here today.
So we have a world that is endogenous to our energies. Education as a technology. We think about AI. The most important technology is education. It is what, nature gives us life, but it is this nurture that really allows these lives to become meaningful. And we often talk about change, but I would like to underline contribution. That's what each of us can do. We can change ourselves and we can contribute to the world. Much easier than changing the world. The world is really hard to change, but we can change ourselves through education and we can contribute, as Shibu said, with humility. With humility. And beyond the endogeneity and beyond the education, what we have this morning is actually exemplars. Those are the people that we are honoring this morning. Each of us is in some way involved in education. That's why we are here. I'm a professor at INSEAD in France, but I'm here. I feel so privileged to be a part of this. And what you will see is a group of people who are actually exemplars of the kinds of things you and I think about. The people that we are honoring this morning, we found that what they were working on, the areas in which they tuned their energies, these were important areas. Whether it was infrastructure in a school, whether it was learning through play, whether it was breaking down caste barriers, whether it was having safety and no substance abuse in school, and not only important topics, but people who did this innovatively, people who brought collaboration and creativity to the way in which they've been organizing their contribution. Nothing important can be done alone. I repeat, nothing important can be done alone. And these are people who understand the notion that leadership is actually about enabling. So I often learned from Shibu that CEO means Chief Enabling Officer, not Chief Executive Officer. You have to enable this kind of change, and that's what these exemplars have shown us. They've created communities, they've mobilized collective action. All action is social, but to do this with endurance and energy, so they worked on important things. They worked in innovative ways, and they've achieved good impact and good inclusion. These are the kinds of characteristics that the jury contemplated as we selected the inaugural winners. Now, I want to say a word about the jury. I don't know if you want to put up a slide, but let me just read. There are 6 jury members. Anita Karwal, who was former Secretary, Department of School Education and Literacy in the Ministry of Education. Anshu Gupta, who's a founder of Gunj. He's a Magsaysay awardee, a pioneer in dignity-driven social entrepreneurship. Professor Stephen Durkon, he's a professor of economic policy at the Blavatnik School of Government at the University of Oxford. Sudha Varghese, who's a veteran, she's a Padma Shri awardee, CEO of Nari Gunjan, which is dedicated to the education and empowerment of marginalized communities, and Dr. Urvashi Sahani, founder and CEO of Study Hall Education Foundation. She's an Ashoka Fellow, an expert in education and gender. This was a jury along with me. Thank you for the trust. I know that several hundred nominations were made, something more than 400. And out of this, today, as all things in India, everything is such a large, but we are just exemplifying with 4 awardees. And this is really the honor that I have. I think we invite Kumari and Shibu up here, please. Are we ready to, guys, are we ready to invite the awardees? Shall we do that? Are you ready to meet them? Let's do it. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Subi. It's now time to announce the awardees. Are we ready? Yes. We can't hear you. Yes. Can we get a higher yes? Yes.
Introducing the first awardee. स्कूल बच्चों के लिए एक ऐसे आंगन की तरह है जहां पर वो अपने बेहतर जिंदगी के लिए शुरुआती कदम लेते हैं और वहीं पर से उसके स्वप्नों को एक विस्तृत आकाश मिलता है। और जो स्कूल अपने बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था कर देता है वो विद्यालय बच्चों के सपनों का विद्यालय होता है। जब मैं योगदान किया यहाँ तो यहाँ की लगभग 70 से 80% संरचनात्मक स्थिति जो भी थी वो बिल्कुल एकदम ध्वस्त थी। जो क्लासरूम थे वो सब के सब मतलब फ्लोर उसका टूटा हुआ, दीवारों पर कोई रंग नहीं, पंखे नहीं, बिजली नहीं, बेंच टूटे फूटे थे। बच्चे जो कुछ आते भी थे उनकी दुनिया अलग थी, अभिभावकों की दुनिया अलग थी, शिक्षकों की दुनिया अलग थी, सबके सब एक दूसरे से विलग थे। पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं, 12 बजते बजते बच्चे सब भागने का कोशिश करते थे। सबसे पहले तो शिक्षकों से हमने बात की। मैंने उन्हें कहा था कि आपको चाहिए क्या क्या वो आप हमें बताएं, वो हम मुहैया कराएंगे, आप बस बच्चों के बीच काम करिए। एक हफ्ता के अंदर हमने फिर पेरेंट्स को भी असेंबल किया। उस मीटिंग में हमने कहा था कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए, आपके बच्चे को हम वेल कंडीशन में एजुकेशन का पूरा माहौल है। हम भी उसी विद्यालय में पढ़े थे। तब तो मतलब ऐसा लगता था जैसे मतलब विद्यार्थी से टीचर का कोई लगाव नहीं था, और अभी तो लगता ही नहीं है कि विद्यार्थी जो है वो टीचर के साथ में है, वो अपने फ्रेंड के साथ में। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हर बच्चे को लगे कि यह स्कूल मेरे लिए स्पेशल कर रहा है। जब ज्ञान चर्चा की बात असेंबली में हुई तो बच्चे मंच पे जाते हैं, सारे बच्चे एक दिन बारी आती है और उनमें एक जिज्ञासा होती है कि कल जाएंगे हम मंच पे बोलेंगे, हमारा कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, हम कैसे बोलेंगे। तो घर में बच्चे अभ्यास करते हैं। जैसे आज हम स्कूल में लीडर बने, कल हम अपने गांव में बनेंगे, कल बीहट में बनेंगे, प्रधानमंत्री तक का भी सफर तय कर सकते हैं लीडरशिप, क्योंकि इस चीज को हमने बच्चे से सीखा है। यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद तक। हम लोग के टीचर जो है समझिए ऐसा कि आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी और उसकी चर्चा पे आप लोग आपको पूरा ब्रह्मांड घुमाएंगे, वैसे पढ़ाते हैं हम लोग को, जिसमें हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आता है। जिससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, टीचिंग प्रोफेशनल का वो काम होता है। तो मैं भी अगर कुछ ऐसा करूंगा तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो अपने स्कूल को ऐसा आइडियल बनाऊंगा कि लोग कहेंगे नहीं, सरकारी इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए। I request Ranjan Kumar sir to please join us on stage. Put your hands together, everyone. While sir is joining us, I request Dr. Subi to please share the citation. Let me read the citation from the So, Ranjan Kumar has transformed challenges into opportunities. He has rallied community members, including local youth and corporate sponsors, to address teacher shortages. As we saw in the video, he has enhanced infrastructure and introduced new learning initiatives. Learning should be fun. Shibu sir said, enjoy. I have learned that if you want to enjoy, you have to enable joy. That's what he has done for children. Okay? His ability to mobilize people and inspire action has built a school powered by collective effort where partnerships drive progress. Through his inclusive leadership, classrooms that were once lacking resources now thrive with engaged educators, improved facilities, and student-led initiatives like Gyan Charcha that we heard about, and interactive quizzes, proving that collaboration is the foundation of lasting educational change. Please congratulate Ranjan. Thank you. Shibul, Nari, please. Thank you, Dr. Subi. I would also request Shri Sanjay sir, Honorable Secretary of Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. Sir, can you please join sir and ma'am and Dr. Subi on stage, sir?
Introducing the next awardee. So, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜಿತಾ ಎನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ CDPO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ಗೆ 90 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಊರ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಫೋನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ 1.5 ವರ್ಷ. ರಜಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಟ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ತರದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗು ಯಾವ್ದೇ ಬಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಆ ತರ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು 8 ಕೇಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿರೋಂಥದ್ದು 25-30 ಮಾಡಿದೀನಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, PDOs ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. I now request Rajitha N to please join us on stage, and while ma'am is joining us, I request Dr. Subi to please share the citation. Congratulations. Let us read the citation from the jury. Rajitha has championed inclusivity and equity in early childhood care and education. We know that early childhood, all the research shows, attention to early childhood pays lifelong dividends. And doing this, especially with marginalized communities, is just an incredibly important contribution and an inspiration. She has been breaking barriers for tribal communities, especially in remote regions. By working with Anganwadi workers, building trust with families, and advocating for girls' education, she has ensured that the marginalized children have access to structured, play-based learning. Her work has expanded preschool enrollment, improved teacher collaboration, and provided a safe, culturally responsive foundation for early learning. This is the way to ensure that every child, regardless of background, has an equal start in life. Congratulations, Rajitha. Introducing the next awardee. We need the hype to be up. We need a huge round of applause. Keep it going, please. பிள்ளைங்க வந்து டிசிப்ளின் இல்லாம இருக்காங்க. ஆம்பளை பிள்ளைங்க இந்த போதை பழக்கங்கள்லாம் அதிகமா இருக்கு. 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் இப்படிதான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இந்த எச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த ஊர்ல இந்த ஸ்கூல்ன்றது ஒரு பெருமையா தான் நான் நினைக்கிறேன். பள்ளியோடைய அடிப்படை பிரச்சனைன்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரக்ஸ். நியர்பை பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சின்ன ஏஜ் இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியாது யார் என்ன பழக்கம் பண்ணா. அதான் அதை நம்ம திருத்த வேண்டியது நம்ம கடமை இல்லையா.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன்னா காம்பவுண்ட் எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கு, ரோட்ல போறவங்கலாம் உள்ள வந்துட்டு போறாங்க, தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நடக்குது. ஸோ அதுக்காக முதல்ல வந்து காம்பவுண்ட் வாலை போடணும்னு தான் காம்பவுண்ட் வாலுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி காம்பவுண்ட் வால் போட்டேன். எல்லா டீச்சர்ஸோடைய கோஆப்ரேஷனுடைய ஒவ்வொரு டேர்மும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கம்பெனி இல்லை ஹை இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ஒவ்வொரு மேனேஜர்ஸையும் இது பண்ணி எல்லாருமே நாங்கள் ரெடி பண்ணி. மாணவர்கள் எவரும் வகுப்பறையில் இருப்பதில்லை. ஒரு 14 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரக்குக்கு அடிக்ட் ஆகி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வருவாங்க. மாணவர்களை வந்து கூப்பிட்டாங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் பெற்றோர் மீட்டிங் போட்டு பெற்றோர்களோட பிள்ளைங்களை வந்து கவனிக்க சொல்லும்போது பெற்றோர்களே என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களால் முடியல சார், எங்களை அடிக்க வர்றாங்க, நீங்களே பார்த்துக்குங்க. ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், ஹெட் மாஸ்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், நாங்கள் பப்ளிக் ஒரு 10 பேர், காவல்துறை எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் எங்களை அட்டாக் பண்ண கூட தயாராகிட்டாங்க சார். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பசங்க முக்கியம் சொல்லிட்டு போராடி அவங்கள மீட்டு கொண்டாந்து, இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ட்ரக்ஸு அடிக்க சிவிங்க ஒன்று சாப்பிடுவாங்க தெரியுங்களா, அதை வாங்கி வச்சு டிராவல் வந்து கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய செருப்பு ஒரு வெரைட்டி கலர் செருப்பு போட்டிருப்பாங்க ஒரு கம்யூனிட்டி, இன்னொரு கம்யூனிட்டி ஒரு கலர் கயிறு கட்டியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கயிறை கட் பண்ணிட்டு செருப்பை வந்து அந்த கலர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணேன். அப்போ வந்து பார்த்த உடனே இந்த பிள்ளை இந்த ஜாதி அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்கிறது. முன்னாடியெல்லாம் பசங்க வந்து போதை பொருட்கள் அடிமையாகி ரொம்ப சுற்றி இருந்தாங்க சார். இப்போ அந்த மாரி இல்லை சார், எல்லாம் கரெக்டாக கொஞ்சம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு சார் முன்னாடியோட. ஒரு நல்ல ஃபியூச்சரை தேடி தரப்போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். நான் இங்கே வந்து என் பொண்ணை சேர்த்தது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குது. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என் பொண்ணால் இன்னும் இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்து பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்கூலை வந்து இன்னும் பெருமையாக பேசணுன்றது தான் என்னோட. நான் இங்கே வரும்போது இருந்தது இருக்கிறதுலே தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட் ஸ்கூலாக இருந்தது. இன்னைக்கு பார்க்கும்போது என்னோட இந்த ஸ்கூலானது ஒரு மாடல் ஸ்கூலா, ஒரு மாதிரி பள்ளியா இருக்குது. I request Xavier Kumar to please join us on stage. And while sir is joining us, I request Dr. Kumar to please share the celebration. Welcome. Congratulations. Let me read the citation for Mr. Chandrakumar. So, Xavier Chandrakumar has exemplified commitment to continuous improvement by leading a structured long-term transformation that has reshaped his school into a safe, inclusive, and a thriving learning environment. He addressed caste-based divisions, substance abuse, and socio-emotional challenges. He fostered unity and trust within the school and its wider community. His sustained efforts ensure that children, regardless of background, can learn and grow in a space that nurtures academic success and personal well-being, demonstrating the power of leading by driving systemic change. Please join me in congratulating Mr. Chandrakumar. We have a huge surprise for you as well. We also have a special mention. हमें बहुत पसंद है किताबें पढ़ना। लाइब्रेरी में पढ़ने में अच्छा लगता है और यहाँ जो डाउट रहता है भैया जी से पूछ लेते हैं। मैंने लाइब्रेरी में आके 40 बुक्स पढ़ी हैं। मैं 3rd क्लास में थी, छोटी थी। मैंने पहली बार ऐसी किताबें देखी, लाइक कलरफुल भी बुक्स होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा शायद मेरे साथियों को देख कर भी उतना पसंद आएगा। फिर मैंने उसको अपनी घर की रस्सियों पर उन सारी किताबों को टांगा। तो इस तरह से हमारी लाइब्रेरी का शुरुआत। किताबें हमेशा दिल के करीब रही हैं। 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि घर की स्थिति बहुत खराब है, 4 भाई बहन हो तुम लोग। तो कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिला कि एक काम करो, ये सब छोड़ दो, पढ़ाई करोगे या फिर दूसरों को देखोगे। पर मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरे फादर मुझे इसी बात से मोटिवेट करते थे हमेशा कि मुस्कान, पढ़ाई का जो हक है वो सबको है।
पढ़ाई होती है, पढ़ाई पसंद आती है, गेम होता है, गेम पसंद आता है, मस्ती भी होती है और बर्थडे भी होता है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, किताबें बढ़ने लगी। हमारी कम्युनिटी चबूतरा है, तो हमने सोचा कि वो पूरे टाइम खाली रहता है तो हम उस पे चालू करें लगाना। वहाँ पे भी कभी गाय आ जा रही है चबूतरे पे, कभी बकरी आ जा रही है, किताबें फाड़ देती हैं कभी। फिर 2 साल पहले एक कॉलेज है, वहाँ के बच्चों को एक थीम मिला था, एक प्रोजेक्ट मिला था कि कबाड़ से जुगाड़ करके बनाना था उनको। तो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर दिया। ऐसे कई बच्चे जो नहीं जा रहे थे स्कूल या उनको पढ़ने में रुचि नहीं थी, वो जब उस केंद्र में आते हैं मुस्कान के, तो वहां देखते हैं कि भाई 5th क्लास का बच्चा 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ना सिखा रहा है या उसकी होमवर्क में मदद कर रहा है। तो मस्ती कौन बच्चा नहीं करना चाहेगा, बट वो मस्ती मस्ती में सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। मैं बचपन से इस बस्ती में पली बड़ी हुई हूँ और एक इस्लाम एरिया में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सब लोग मजदूरी करते हैं, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। वहाँ के बच्चे क्या करेंगे, ऐसा उनका थॉट रहता है। जो इक्वलिटी है ना, वो मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। तो एक पढ़ाई है जिसमें अपन को समानता है। What a powerful video. On that note, I request Muskan to please join us on stage. Namaste, namaste, Muskan. You are bringing joy to all of us. Such a young person. This is great. Let's read what Muskan, the citation when the jury debated. You brought energy to the whole jury, and it was impossible not to kind of have you up here on stage. So, Muskan has redefined informal learning through her innovative, community-driven library initiative. She created a structured, engaging space for children in resource-constrained environments, which we just saw in the video. Recognizing that reading is a powerful tool for learning. Sometimes people ask me, what should my child learn? And my answer is, learn to learn. Reading is where learning starts. And Muskan, you unlocked that for so many children here. So reading is a powerful tool for learning, knowing that she has integrated mentorship, interactive storytelling, and student-led activities to make education more accessible, more fun, more inspiring. Her never say die attitude and creative problem solving have transformed learning opportunities for children and inspired others to replicate and scale her model, proving that innovation is not only possible, it is absolutely necessary, especially in challenging conditions. Thank you and congratulations, Muskan. May we have a huge round of applause. I would like to invite all our awardees and jury members to join us on stage for a group picture. While some of our esteemed jury members couldn't be here today, we are honored to have Sudha Valji and Anshu Gupta with us here. And I request you, sir and ma'am, to please join us on stage. We are also delighted to have our screening committee members, Veena Sagar, Venkatraman Iyer, and Asha Thomas with us today. Ma'am, sir, we warmly invite you to the stage. Let's have a huge round of applause for all of our jury members. Requesting Veena ma'am to please join us on stage. Is good? Are we good?
this will be done soon. Let's give them a huge round of applause and let's keep it going. This is truly a very, very powerful moment. Don't you agree, Akhil? 100% I do. I think this is what the future of education and change leaders look like. And absolutely mesmerized.